I think we are meeting after a long time, है ना? Is it? So guys, अभी आपकी जीके की और करंट अफेयर्स की लाइक कंबाइंड जो भी ये चल रहा है, एक ही क्लास हो रही है एवरीबडी? Yes, yes. You are the only one. Yes, Faz, what are you saying, बच्चा? You are the only one who teaches GK as well as current affair. Okay, so right now we just have one class. Okay, okay. ठीक है. After some time, I'll talk to sir regarding more classes. ठीक है, चलो. Let us begin. So, what were the topics that we covered in the last class? Siri, I had sent you the PDF for both the classes, today's class as well as the last class. So you can just forward it to the group, बच्चा. ठीक है? ठीक है. 6th August was the last date. ठीक है. ठीक है, चलो. Let me ask a few questions from the last class. Guys, am I audible? Okay, let's see if we have a question. Okay, when was the START Treaty signed? START Treaty. Let's see if you guys remember. No, no, no. It came into force on in February 2011. Very good, Siri, but it was signed in 2010. What is the full form for the START Treaty? Strategic Arms Reduction Treaty. Very good, Siri. Guys, you were also there in the class. Why aren't you answering, Anji? Okay, next question is Russia has, stepped back from which treaty? मैम INF Yeah, full form, bachcha. इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस. Very good, very good, very good, Saketa. Very good, Arpita. You guys remember it. Okay. Who were the parties involved in the signing of the INF Treaty, bachcha? Let's see. US US and President Russia. Yes, 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 of course. Like I'm asking about the name of the presidents, like the secretary who were involved. Ronald Ronald, something yes, Faz. Ronald Reagan from and the US, the Soviet US General. president and Soviet General Secretary Mikhail Gorbachev. ठीक है? Okay, very good. Now, what was the venue for the Ramsar COP 15? विक्टोरिया फॉल्स Airport. इन जिम्बाब्वे. Very good. Okay, what was the theme? Protecting wetland for the our common future. ये क्या अभी सीरी ने क्या ग्रुप पे जो है पीडीएफ फॉरवर्ड किया और आप लोग वहां से देख रहे हो और यू गाइस रिमेम्बर? सिरी ने तो नहीं कुछ शेयर किया बट आई हैव सीन माय नोट्स. ओके, यू हैव सीन योर नोट सो यू आर बीइंग ऑनेस्ट. ओके, ठीक है, चलो. वेरी गुड. सी, when do we observe the Hiroshima Day? 6th August 1945. Very good, fast. Yes, very good, Siri, बच्चा. Yeah.
Okay, let's see. So Ministry of Petroleum and Natural Gas has come up with an initiative for the, truck force. What is the name of that initiative? अपना घर initiative. Very good, Siri. ठीक है. What was the name of the bomb, the nickname given to the bomb which was dropped on Nagasaki? Fat Man. The name was Pac-Man. Okay, very good. Chalo, let's see if we have more questions. Okay. Chalo. Yes. The World Championship of Legends WCL cricket tournament was held at, and who won it? Where was it held and who won it? South Africa has won. Held at Edgbaston, Birmingham. है ना? Remember? Chalo bachcho. Let us begin with today's topics now. Very good. Your performance was good today. Even if you guys just consulted your notes, at least याद तो रहेगा. चलो. गाइस मेरी वॉइस में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? ये कुछ और खुल गया है. एक सेकेंड. ये मैंने ना शायद पीडीएफ खोल दिया है. एक सेकेंड. ये खोल रहा था. ये बंद करते हैं. स्टॉप शेयर. Okay. I hope everybody can see the screen. Everybody, you guys can see the screen? Donald Trump tariffs on India. ये न्यूज सुनी है सबने? The things that are being done by Trump this time when he has come in power, है ना? He has gone. I shouldn't say that. This video will go on with him. ठीक है, चलो. US President Donald Trump has imposed 50% tariff on India, 25% reciprocal tariff, and 25% additional tariffs on India for its crude oil trade with Russia. So, guys, before starting with this, let me give you a background. ठीक है? Have we studied this topic before? Like Trump tariffs हमने कभी पढ़ा है? पढ़ा है? No? Okay. So, देखो, वो पहले से that's a different topic, but let me explain it to you in just brief. What happened when Trump came into power this time? He was like he follows this policy of America first. Okay. Okay, he follows this policy of America first. This means that he was of this opinion that why should we favor these developing nations? America is a developed country. Everybody is aware of it, right? So they are rich. They are quite rich. So when it comes to trade with different countries, they were, putting a lot of tariffs on the US products. ठीक? All the countries, ये जो poor countries, developing countries थी, but when it comes to US was considerate with them. US was considerate with them in the sense that they were not charging so much tariff on the products, thinking that let them develop. But when Trump came into power, he was of this opinion कि why should we favor them? Now it is America's interest first that I will keep in mind. And now if you are imposing tariffs on us, on our products, then we will also impose tariffs on
your products if they come to our country. पहले बताओ, are we clear till here? This is the background. Is the background clear, बच्चों? ठीक ठीक, okay okay, very good. So what happened? US President Donald Trump has imposed 50% tariff on India. So basically, he announced this in April. ठीक है? Now what happened? He had given 3 months time to these what do we say, countries to get in trade deals with him. कि कैसे करेंगे, तुम इतना लगा लो, मैं इतना लगा लेती हूँ. But there wasn't any trade deal between India and US. ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड डील हो गई, बट the trade deal between India and US was not successful. That is the reason now on August 1st, I think, he imposed tariff on India. ठीक है, he imposed 25% reciprocal tariffs. Now, what do we mean by reciprocal tariffs? When he announced in April, he said that जितना आप हम पे लगा उतना लगाएंगे, दैट इज रेसिप्रोकल टैरिफ. रेसिप्रोकल है ना, विल रेसिप्रोकेट टू वट एवर यू पुट ऑन अस. ठीक है, नाउ 25% वॉज चार्ज एज अ रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स प्लस 25% एडिशनल. वाई? देखो 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज पे लगाया है. नाउ 25% एडिशनल टैरिफ्स. वाई? बिकॉज ऑफ इट्स क्रूड ऑयल ट्रेड विद रशिया. पहले बताओ आप लोग को ये रशिया यूएस का इशू पता है? इनका डिस्प्यूट है, पता है? नो आइडिया. Okay. So what happens? If you guys must have heard of the Cold War, which ended in 1991 when this USSR disintegrated. The Cold War was between two blocks. One was led by USSR and one was led by US. So Russia was the greatest power in USSR. ठीक है? So they have been on loggerheads since 1991. ठीक है? Now what happened after that? ठीक है, तो पहले से इनके झगड़े वगड़े चल रहे थे. Now what happened? अभी in news recently, you guys must have read, अगर हल्का सा भी पढ़ा होगा, याद होगा, that Russia attacked Ukraine. ठीक है, remember? थोड़ा सा सुना था यूक्रेन और रशिया का डिस्प्यूट जो चल रहा था, एवरीबडी. ठीक है ठीक है, everybody knows about it, right? So what happened? US was not happy with it, that how can you invade a country? This was also a reason, Russia and US being at loggerheads. Now, what happened? This was the reason they said कि we will impose sanctions on you if you continue trading with Russia. Obviously, India continued trading with Russia. So, India को 25% penalty में भी tariff मिला है. So, how much is it total? It's total of 50% for both the things. ठीक है? The additional 25% tariff was imposed by a US executive order titled Addressing Threats to the US by the government of the Russian Federation. ठीक है? So what did the order say? The orders which was released by the US executive, it read Addressing Threats to the US by the government of the Russian Federation. 30, जो additional 25% था उसके लिए this was the statement given by. India and Brazil have now become the highest tariffed country by the US. Imagine. इतना तगड़ा हमको टैक्स किया है, इतना तगड़ा they have imposed tariff on us that after Brazil, like, no, we are the first one, and behind us it is the Brazil who has been taxed the highest. Now, what led to the failed trade talks and other issues? Agriculture and dairy. Despite several months of talks, India and the US were unable to reach. I told you in the beginning, that the parties were advised to engage in trade talks, right? Remember? याद है? He announced it in April, and then he said, let us, I'll just postpone the tariffs and let us engage in trade talks. If we are able to, get on something, then we will do like that. Otherwise, I'll impose tariff, whatever I want to. Remember, I told you? ठीक है? So now what happened? Despite several round of talks, so similarly, there were round of talks between India and US as well. Despite several rounds of talks, India and the US were unable to reach a trade agreement. ठीक है? Now, there couldn't be any trade agreement between India and US, with the US expressing concerns over India's cautious approach to liberalizing sensitive sectors like agriculture and dairy. Now, if we talk about this thing, are you guys aware of the fact that India is highly dependent? Like, India is an agricultural economy, and we are highly dependent on agriculture as well as dairy. पता है ये बात?
हाँ जी, पता है? ठीक है। नाउ लेट्स सी, वी हैव अ मैसेज। हाँ जी, ठीक। नाउ व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज द स्टैंड ऑफ this what do we say, Trump? He said that India should open its market for the US के agriculture and dairy products. This was the claim of Trump. वो कह रहा था कि भैया अपनी मार्केट खोल दो एंड लिबरलाइज योर एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर बाय सो दैट वी कैन ऑल्सो सेंड अवर प्रोडक्ट्स टू योर कंट्री. India is very sensitive when it comes to agriculture and dairy country because obviously because of the fact that we are highly dependent on it and if their cheap products come in our country तो यहाँ पे भी तो problems हो जाएंगी ना because of the competition between the Indian products and the US products getting it everybody. So India is very sensitive when it comes to agriculture and dairy and they said no to it. This was the reason that there was in देखो ट्रम्प का एक ही फंडा है यहाँ की एग्रीकल्चर मार्केट को वो कैप्चर करना चाहता है. ठीक है. Now what happened, ट्रेड टॉक्स नहीं हो पाई क्योंकि रीजन ही यही था. ट्रेड टॉक ना होने का द ओनली रीजन वाज दैट इंडिया डज नॉट वांट टू ओपन इट्स एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर. पहले बताओ, आर वी क्लियर टिल हियर एवरीबॉडी? यहाँ तक कोई डाउट है? I don't know why, but I'm very sleepy today. So you guys must be seeing that every now and then I am yawning. ठीक है. अच्छा बच्चों, वन मोर थिंग, इन द लास्ट सेशन यू गाइस आस्क्ड मी कि मैम प्लिनरी सेशन क्या होता है, तो मैंने ना आप लोगों को गलत बताया था. आई टोल्ड यू कि प्लिनरी सेशन होता है जो स्टार्टिंग का सेशन होता है. नो, दैट इज रॉन्ग. वो फिर मैंने चेक किया क्योंकि मुझे तभी लग रहा था कि मैं गलत बता रही हूँ. प्लीनरी सेशन इज अ सेशन विच इज मैंडेटरी एंड if you are a part of a multilateral organization and then there is a plenary session of that organization, every member is bound to attend that session. ठीक है? Clear everybody? Okay. ठीक है. The base duty of 25% kicked in from August 7 and additional tariff of 25% will take effect from 27th August. Now, which is this base one and which is this 25 one? बताओ. Let's see your analysis. Can you repeat the question? My question is here we can see that the base duty of 25% kicked in from August 7 and additional tariff of 25% will take effect from August 27. So what are these? Like why two? Which one is first one and which one is second one? बताओ. एनालिसिस, थोड़ा सा एनालिसिस. बताओ. सोचो, हल्का सा सोचो. अभी मैंने पीछे बताया फर्स्ट पॉइंट में एवरीबडी. 25% base duty or reciprocal to a tariff, right? They have imposed 25% as reciprocal tariff and to additional tariff of 25%. That is the penalty that has been imposed for trading crude oil with Russia. Now clear, everybody? Clear? Okay, okay. Russian oil and defense equipment. The US voiced concern over India's continued purchase of Russian oil and military equipment. As I told you in the beginning, that since both of them are loggerhead, US is even angry with India that India shouldn't also trade with US. So when it comes to oil, India takes a lot of oil from Russia because they provide it at a cheap price. ठीक.
The US claimed that India's Russian oil purchases are funding the war in Ukraine and therefore imposed an extra 25% on imports from India. Now what happened? देखो, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, रशिया has invaded Ukraine and US is not happy with it. So भैया ट्रम्प जी कह रहे हैं, वो सिर्फ एक बहाना है वैसे, दैट आप ना साइड से घुमा के, मतलब ऐसा कहते हैं ना, नाक सीधी पकड़ो या उल्टी पकड़ो, दैट थिंग, आप ना साइड से घुमा के यू आर फंडिंग द वॉर. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू आर परचेजिंग गुड्स, सॉरी, व्हेन यू आर परचेजिंग ऑयल, मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया, यू आर पेइंग देम समथिंग. नाउ दैट पेमेंट विल बी यूज्ड फॉर वॉर विद यूक्रेन. पहले बताओ दिस पॉइंट, इज इट क्लियर? क्लियर? आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट बच्चों? कोई डाउट है तो पूछो, नहीं समझ आता है तो बोल दिया करो कि मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन, आई विल एक्सप्लेन इट, डोंट वरी. Trade deficits in the US. The US highlighted a persistent 45 billion deficit with India. Trump advocates the America First policy and wants to erase this deficit. So what do we mean by yeah, trade deficit? Trade deficit is when, just give me a moment. Hello? So trade deficit is when import is, now I have explained you a lot by now. So can you tell me that why in US the import from India was more and export was less? Anybody? Abhi tak. Abhi to he has imposed penalties. This was the reason that why penalty was imposed. This was the reason why tariff was imposed. ठीक है? So if anybody can tell me why import was more and export was less, anybody? थोड़ा सा दिमाग चलाओ. तो एक मिनट देना, थोड़ा एसी बंद करती हूँ, बहुत ठंडा लग रहा है. बताओ, तब तक आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. जी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स बच्चों. नोबडी नोज द रीजन. एटलीस्ट नो ही बोल दो तो मैं बताऊंगी. नोबडी नोज द रीजन. देखो मैंने क्या बोला था, कि जो यूएस प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, वो जो बाहर जा रहे थे उनपे बहुत एक्स्ट्रा टैरिफ था. और वही प्रोडक्ट्स जब इंडिया के, फॉर एग्जांपल इंडियन प्रोडक्ट्स जब यूएस में आ रहे थे तो कम टैरिफ था. क्यों? क्योंकि देवर फेवरिंग दिस डेवलपिंग कंट्रीज. तो जब भी कोई प्रोडक्ट आपका महंगा हो रहा है तो अब कम जाएगा ना, द एक्सपोर्ट विल बी लेस बिकॉज दे चार्ज यू विद अ हाई अमाउंट ऑफ टैरिफ. बट सिंस द यूएस इज नॉट चार्जिंग विद अ लॉट ऑफ टैरिफ, तो इम्पोर्ट वाज मोर. समझ आया? पहले बताओ, समझ आया? ठीक है. प्रेशर टैक्टिक्स. The US has signed trade deals with countries like South Africa, Korea. These countries were forced to agree to US demands like making billions of dollars in US projects. India, however, refused to budge to Trump's demand of opening the Indian agriculture sector to US products. ठीक है. So now यूएस की बाकी कंट्रीज के साथ, as I told you that there were trade deals going on, the trade deal was signed with all other countries. The trade deal was signed. How it was signed? That he literally persuaded them. How? These countries were forced to agree to US demands like making billions of dollars in US projects. ठीक है, they were forced कि you will invest इतना amount of money in US projects. So they agreed to it, these countries like South Korea, but India did not budge to it. India did not agree to the demand of opening the Indian agriculture sector to US products. ठीक है, क्लियर? पहले बताओ यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है या फिर मैसेज आया हुआ है? माई वॉइस इज ब्रेकिंग.
एवरीबडी माय वॉइस इज ब्रेकिंग। अरे यार, ये बार बार आज कैमरा ऑफ हो जा रहा है। मैं क्लिक कहीं पे करती हूँ। यस मैम। अभी आ रही है? इज इट क्लियर नाउ? अभी आ रही है? एक सेकंड दो, मैं कुछ ठीक करती हूँ, रुको। अब अब आ रही है? गाइस कैन यू हियर मी? एवरीबडी, अगर फिर से नहीं आती है डू लेट मी नो, ठीक है? फिर देन वील डू समथिंग एल्स। थोड़ा सा आज नेटवर्क इशू है, सॉरी बच्चों। तो पहले बताओ, ये वाला पॉइंट क्लियर है? द लास्ट पॉइंट, इज इट क्लियर? हाँ जी, एवरीबडी क्लियर? चलो। Impact of US tariffs on India. Oil uncertainty. India is an energy dependent economy. I hope everybody is aware of the fact that India does not have a lot of production of oil. So we are dependent for oil on other countries, Middle East countries, Russia and everybody. ठीक है? It imports 88% of its crude oil, with a significant portion, over 35% of its crude oil, coming from Russia. So we import our 88% of crude oil. Crude oil, I hope you know, all you know what do we mean by crude oil. Crude oil से ही the petrol and diesel and everything is made. Now what happens? India जो है 88% crude oil import करता है, जिसमें से 35% of it is from Russia. ठीक है? Trump evidently wants India to stop buying Russian oil. However, if India ditches Russian oil for a trade deal with the US, it could lead to a steep increase in domestic fuel prices. देखो, I told you in the beginning itself. तुम पहले बताओ रीजन क्या? मैंने बताया था कि इंडिया क्यों लेता है यूएस से, वो सॉरी रशिया से। बताओ। I'm waiting for your answers, everybody. I told you in the beginning itself. Guys, I'm waiting. I told you in the beginning that why India takes it from Russia. Less tariff. No, no, Faz. Something else. I told you in the beginning itself. याद करो, मैंने बताया था। स्ट्रेस करो अगर लिख रहे होगे नोट्स। Russian Federation, something like क्या? Russian Federation. The reason is I told you in the beginning कि Russia sells oil at a cheap price to different countries to attract buyers, to attract market. It sells it at a cheaper price. याद आया? बताया था या नहीं बताया था? बताओ। बताया था ना, या नहीं बताया था मैंने? बताया था, मुझे अच्छे से याद है। ठीक है। नाउ, सो इफ यूएस इम्पोजेस टैरिफ्स ऑन अस, ठीक है, तो एक तो ऑयल सर्टेनिटी हो जाएगी। देखो, हमें रशिया के साथ तो डील करना ही पड़ेगा, ठीक है? नहीं करेंगे तो देयर विल बी oil prices rise in the market, because when we will get it at a higher price, won't we sell it at a higher price? ये बताओ। Clear? Everybody, are we clear with this point? बताओ। तुम लोग बहुत ड्राई हो गए हो आज, क्या हुआ है? मुझे भी ड्राई कर रहे हो तुम लोग। पानी पी लेती हूँ, एक सेकेंड। सॉरी गाइस, आज थोड़ा बार बार मुझे कैमरा ऑन ऑफ करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सम डिस्टर्बेंस इन द बैकग्राउंड। तो इफ somebody goes by, I just switch off the camera and then
I switch it on. ठीक है, lower exports. The US tariff will directly impact about 10% of India's total exports to the US. अच्छा, अब now give me the reason for this, please. इसका तो you guys should be able to give the reason. If you guys won't be able to give the reason for this one, I will be really sad. Why the exports will be lower now? Guys, please दुखी मत करो मुझे, ऐसे मत करो, मैंने इतने मन से सब सही से पढ़ाया है तुम लोगों को. Due to tariff? क्या ड्यू टू टैरिफ? क्या Faz? Obviously, when the tariffs will be high, yes, Faz, you are right. So the products will be costlier. So it will be, it will ultimately lead to no market in US, because of which the products will be, what do we say? It will lead to lower export. It is written in the point itself, because the tariffs are high, so the exports will be less. Yes, Akita, very good, bacha. The US tariff will directly impact about 10% of India's total exports to the US, affecting nearly 87 billion worth of goods annually. Sectors like smartphones, pharma, jewelry, automobile components, and textiles are going to be the worst hit. याद रखना, ठीक है थोड़ा सा. Economic growth. Economists predict a negative impact on India's GDP growth, with the Asian Development Bank revising its financial year 25-26 forecast down to 6.5% from 6.7% in its July 2025 report. Obviously, it will impact the economic growth as well. ठीक है? Lower product competitiveness. India's products are now less competitive compared to those from other Asian countries. अरे, like Vietnam facing only a 25% tariff, US tariff, Indonesia and Japan. Now it will lead to lower product competitiveness for Indian products. Why? First of all, देखो, if the products are expensive, तो India हो सकता है उतने products ना बेच पाए. And even if they are there, they are expensive because of the high tariff duty. ठीक है? So obviously कोई product किसी country के अगर सस्ता मिल रहा है, तो will India sell it? Sorry, कोई India का product लेगा? पहले ये बताओ. No. No, right? This is the reason that it will lead to lower product competitiveness. Deteriorating Indo-US ties. Obviously, tariffs have added tensions to bilateral relationships. See, the last term, and even when the relationship started, the relationship between this Trump session started, the relationships were good. But with all that he's doing right now, the relations are worsened. The US is seen growing closer to Pakistan alongside the tariff wars. Now US is siding with Pakistan. अभी याद है पहलगाम अटैक के बाद US did something. Remember? US, favored Pakistan somehow. Remember? क्या किया था फैज बताओ? They provided loan to Pakistan amidst the पहलगाम अटैक. ठीक है? Creating a vacuum in the celebrated Indo-Pacific alignment between New Delhi and Washington. ठीक है, पहले बताओ इस टॉपिक में कोई डाउट है? Everybody, we are done with this topic. Is there any doubt in this topic? Now let us read this. Mahanadi water dispute. Recently, Odisha Chief Minister Mohan Charan Manji sent a proposal to Chhattisgarh CM Vishnudev Sai seeking a mutually beneficial settlement regarding the Mahanadi river dispute. So what is the dispute all about? So before understanding, एक simple सी चीज समझते हैं. Do you guys know this, the meaning of this upper riparian state and lower riparian state? सुना है? No? ठीक है. So देखो, upper riparian, when we talk about a river, you have to remember this forever, because we'll read a lot of river disputes. अभी next class में we have a China वाला also pending. उसकी PPT मैंने बना रखी. It's a very good and important topic. ठीक है? So what happens when it comes to river? So the upper riparian state is the one who lies above, and lower riparian state is the one who lies here.
अपर, लोअर. नाउ लेट्स से अ रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसे और ऐसे रिवर फ्लो कर रही है. ये अपर राइपेरियन, लोअर राइपेरियन, और ऐसे ऐसे गिर रही है. नाउ टेल मी हु विल हैव अ बेटर कंट्रोल ओवर द वाटर ऑफ द रिवर. लाइक हु कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ द रिवर, द अपर राइपेरियन स्टेट और द लोअर राइपेरियन स्टेट. हाँ, दर्द होने लगती है, अब तुम लोग बताओ. मैम अपर. Yes, very good, Arpita. Very good, Saketa. Upper Riparian state. Let's take it, understand it with an example. Now, let's say what happens. सीढ़ी ना फिफ्थ फ्लोर पे खड़ी है, ठीक है, ठीक. और ये बाकी सब लोग नीचे खड़े हो, एंड सीरी इज गिविंग यू वाटर फ्रॉम द फिफ्थ फ्लोर. ऐसे डाल रही है और तुम लोग वो पानी ले रहे हो, ठीक. नाउ टेल मी, तुम लोग उस वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो या सीरी ऊपर से कंट्रोल कर सकती है, बताओ. सीरी. हाँ जी. सीरी. सीरी, ठीक है. तो आर यू अंडरस्टैंडिंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ रिवर दैट स्ट्रेट हु लाइज अबव, who has a who is on a higher altitude has a better control over the river in compared to the state who lies lower, on a lower altitude. Hello, are we clear till here, everybody? वैष्णवी, समझ आया है बच्चा आप लोगों को? ठीक है. सो बच्चों, एक मिनट देना बस मुझे. ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड, महानदी का डिस्प्यूट समझते हैं. रिसेंटली उड़ीसा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी सेंट अ प्रपोजल टू छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साई seeking a mutually beneficial settlement regarding the Mahanadi river dispute. So first question that they will ask you is that the Mahanadi water dispute is between which two states? It is between Odisha and Chhattisgarh. So, what is the dispute all about? River Mahanadi that flows through Chhattisgarh and Odisha is a major source of water for agriculture, industry, and hydropower generation. I hope everybody knows the use of a river for any state, be it any state. The use is agriculture, industry, hydropower. These are the main requirements of any state for water. Now, Mahanadi has a total catchment area of 1,600 स्क्वायर किलोमीटर. तो देखो कैचमेंट एरिया क्या होता है, जहां जहां रिवर फ्लो करती है ना, इन वट एवर एरिया इट स्प्रेड्स इट फ्लोज थ्रू, इट इज द रिवर्स कैचमेंट एरिया, ऑफ विच 59% इज इन छत्तीसगढ़, 53.9% इज इन छत्तीसगढ़, एंड 45.73% इज इन ओडिशा, एंड अ वेरी स्मॉल पार्ट इन मध्य प्रदेश. सो इफ आई आस्क यू गाइस कि कौन से तीन स्टेट्स में फ्लो करती है, तो कहाँ कहाँ फ्लो करती है, बताओ. उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश. वेरी गुड गाइस, ठीक है. नाउ ठीक है, यहाँ से समझते हैं. The earlier the river used to cause extensive flooding in the state of Odisha. To contain the floods and properly utilize the Mahanadi river flow, Odisha constructed the Hirakund Dam in 1953. It is the longest dam in India, stretching for around 26 kilometers. ठीक है. Now, let us understand the issue first. देखो इशू पता है क्या है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में बह रही है, ठीक है. Now, what Chhattisgarh is trying to do is, Chhattisgarh is a, I think I have written it here as well. कहीं तो लिखा था मैंने, नहीं लिखा है, ठीक है. छत्तीसगढ़ इज अ
upper riparian state when it comes to this Mahanadi river. ठीक है? It's a upper riparian state. And who's the lower? The Odisha. ठीक है? Lower riparian is Odisha. पहले बताओ इतना क्लियर है? Clear. Now, earlier the river used to cause extensive flooding in the state of Odisha. ठीक है? तो बहुत because of the excessive water in the river, it used to cause a lot of flooding. To contain the floods and properly utilize the Mahanadi River flow, Odisha constructed the Hirakund Dam in 1953. It is the longest dam in India, stretching for around 26 kilometers. ठीक है? Today, Hirakund Dam plays a critical role in irrigation supply and power generation in western Odisha. However, to reap benefits of the Hirakund Dam, Odisha needs consistent Mahanadi River flow. Now, what happened? They constructed a dam. Now, Odisha constructed a dam. Why? To actually, prevent flooding. Plus, देखो कोई भी रिवर का पानी यूटिलाइज करने के लिए यू नीड टू कंस्ट्रक्ट अ डैम. ऐसा नहीं है कि बाल्टी मग्गा उठा के गए और यू गेट वाटर फ्रॉम द रिवर एंड यू यूज इट. ठीक है? यू एक्चुअली हैव टू कंस्ट्रक्ट अ डैम. सो आपको डैम के लिए क्या चाहिए पहले ये बताओ. एनीबडी? एवरीबडी? डैम के लिए व्हाट डू यू नीड? फॉर एनी डैम टू फंक्शन वेल व्हाट डू यू नीड? water filter. वाटर जस्ट वाटर. ठीक. अब ये डैम द हीराकुंड डैम वी विच वी हैव, तो ये क्वेश्चन भी आता है हीराकुंड डैम किस पे? और महारथी रिवर. ठीक. तो अगर आप इसमें पानी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है for it to generate hydropower, to go for agriculture, to go for irrigation, to go for industries, you need water in the dam to function it to for the state to function better. Now what happened? छत्तीसगढ़ एक अपर राइपेरियन कंट्री है, सॉरी स्टेट है. अब छत्तीसगढ़ ने क्या किया? पानी कंट्रोल करना शुरू कर दिया. जिस वजह से हु इज फेसिंग द प्रॉब्लम नाउ? छत्तीसगढ़ पानी कंट्रोल कर रहा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर अपर राइपेरियन कंट्री सिटी. एंड हु इज द लोअर राइपेरियन हियर? Odisha. Odisha is the lower riparian. So now the dispute is all about this, that why Chhattisgarh is controlling the water. Now Odisha is facing issue of water scarcity because of the fact that they are controlling the water. पहले बताओ यहाँ तक dispute समझ आया? I think this was simple and easy. नहीं आया? Ask me, I'll explain it again. Everybody? Fas, Arpita, Vaishnavi, Saketha. Now what happened? Let's see this. The Mahanadi River originates in the highlands of the Dandakaranya region in Chhattisgarh, India. Specifically, its source is near the village of Parshia in Dhamtari district. So, bachcho, this is just a factual information. Just note it down. And river ka origin पूछ लेते हैं in a lot of exams. Not just this river. So, whatever main rivers we have in the country, obviously we have a lot of rivers. So, सबका नहीं याद रखना है. But 10, 12 जो भी major rivers है ना, you have to remember where do they originate from. This is very important. They ask you in each and every exam. The Mahanadi River originates in the highlands of the Dandakaranya region in Chhattisgarh. It originates from there. Specifically, its source is near the village of Farsia in Dhampatri district. The river then flows into Odisha before finally ending into the Bay of Bengal. ठीक है? Guys, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेट पे भी डालोगे ना महानदी रिवर डिस्प्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन, सो यू विल गेट दिस क्वेश्चन फॉर श्योर. In January 2018, the Supreme Court ordered setting up of a 3-member Mahanadi Water Disputes Tribunal under the Interstate River Waters Dispute Act. The final decision by this is still pending. So what happened? Obviously, there was dispute going on between Odisha and Chhattisgarh with respect to the water sharing between the two rivers. So what happened? They approached the Supreme Court. The Supreme Court had set up a tribunal. In which year? In 2018. It was a 3-member ट्रिब्यूनल. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है? नाउ वेयर डिड दे सेट इट अप? अंडर द इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट. ठीक है? इसको पढ़ने से पहले लेट अस मूव हियर. नाउ interstate water dispute. When we talk about the interstate water dispute, Article 262 empowers Parliament to adjudicate such disputes. So under Article 262 of the Constitution of India, these
Parliament has a power that it can adjudicate on these disputes. So if somebody asks you that where does the parliament gets its authority from for adjudicating river disputes, it gets it from Article 262. ठीक है? Interstate River Water Disputes Act, as we read in the previous slide here, ठीक है, empowers the central government to constitute water dispute tribunals. It empowers the central government to constitute water. Obviously, Article 262 में पार्लियामेंट के पास पावर है, तो पार्लियामेंट ने ये एक्ट बना दिया. Now the central government is empowered to constitute dispute tribunals. River Boards Act 1956 provides for the establishment of river boards to advise on interstate river development. ठीक है, ये कुछ नाम है. Now we moved to the Supreme Court, right? Odisha moved Supreme Court. Now, how did they move to the Supreme Court? What is the jurisdiction? Article 131 of the Supreme Court extends original jurisdiction to the Supreme Court. So, if we talk about the fact कि उड़ीसा को कहाँ से jurisdiction आया है to move the Supreme Court for the dispute, that is by virtue of Article 131 of the Indian Constitution. It talks about the original jurisdiction of the Supreme Court. Now, what do we mean by original jurisdiction of the Supreme Court? Wherein you can directly approach the Supreme Court without going to any of the lower courts. Original jurisdiction का मतलब होता है जो आप directly कहीं जा सकते हो. That is the original jurisdiction. Now, क्या है ओरिजिनल डिस्प्यूट? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, इट एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स बिटवीन. तो अगर किसी भी यूनियन और स्टेट के बीच, फॉर इंस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बिकॉज इट इज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सेकेंडली, यूनियन और स्टेट, मतलब ये यूनियन ये स्टेट ये एक तरफ है और एक स्टेट दूसरी तरफ है. The union and state, one or more states on one side and one or more states on the other side. Two or more states interstate. तो अगर दो states के बीच में किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट है, they can move to the Supreme Court. अच्छा, now you guys tell me कि किस पॉइंट में गए हैं? उड़ीसा गया होगा, बताओ. बताओ guys, can you hear me? नहीं नहीं, आई एम आस्किंग विच पॉइंट. बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक. टेल मी. यूनियन या फिर सॉरी स्टेट. यूनियन कहाँ से आया पास पिक्चर में? वेयर डज यूनियन कम फ्रॉम? Okay, I have a message. Let's see. No, Siri, not one. तुम लोग को मैं पिटाई करूं लैपटॉप के अंदर घुस के? बताओ, करूं? थर्ड पॉइंट पढ़ो. एवरीबडी रीड द थर्ड पॉइंट. व्हाट डज इट से? हु विल रीड इट? सीरी, रीड इट. व्हाट डज द थर्ड पॉइंट से? Two or more states enter. भाई, उसकी तो बेचारी की आवाज ही नहीं निकल रही है यार. सॉरी सॉरी सीरी, मुझे आपको नहीं बोलना चाहिए था. अर्पिता, आप पढ़ो. Two or more states enter. What is से that word? से बच्चा, Inter इंटर से. से मीन्स बिटवीन. ठीक है, मतलब किसी बीच के इंटर से. तो अच्छा. कौन सा पॉइंट में कवर होगा उड़ीसा और ये छत्तीसगढ़ का डिस्प्यूट? Isn't it a dispute between two or more states inter se? यस, थर्ड वन. तो तुम लोग की क्या मैं आरती करूं घुस के अंदर? ओ इट इज पहले बताओ, पॉसिबल. सबको क्लियर है? कोई डाउट है? पूरा महानदी डिस्प्यूट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 262, एनी डाउट्स बच्चों? एवरीबडी क्लियर? देखो बच्चों, कुछ भी डाउट हुआ करे ऐसे खुला पूछ लिया करो. आई एक्सप्लेन यू ए नंबर ऑफ टाइम्स. अभी नहीं है, बाद में है तो भी पूछ लिया करो कि इफ यू नो रिवाइज योर नोट्स एंड देन यू गेट अ डाउट, यू कैन आस्क मी कि मैम कैन यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट अगेन. जस्ट टेक्स्ट मी, आई विल रिप्लाई. आई एम नॉट गारंटिंग कि आई विल रिप्लाई यू द सेम डे, बट आई विल रिप्लाई फॉर श्योर. सीरी को भी मैंने रिप्लाई किया, देखो. The Mahanadi River System, some details about Mahanadi. The Mahanadi River System is the third largest of peninsular India after Godavari and Krishna, the third largest river of Odisha state. So if we talk about Mahanadi River, it is the third largest of the peninsular India. So if we talk about the largest river of the peninsular India is Godavari, the second is Krishna,
and third is Mahanadi. It is also the largest river of Odisha state. ठीक है? So if we talk about the tributaries of Mahanadi, Sionat River, Hasdo River, Mand River, Ib River, Ong River, Tel River. बच्चों, this is important. ठीक है? These facts are important. These tributaries are important for any major river. ठीक है? Question आ जाता है कि this which of the following is a tributary of Mahanadi River, or they'll write it like this: Hasdo River is a tributary of, then it is Mahanadi. ठीक है? Tributary क्या होता है? They go and merge with Mahanadi River. ठीक है? A river which goes and merge with a river. तो ये महानदी है, ये सेवनाथ रिवर है. तो when it merges with Mahanadi River, so we say it is a tributary of Mahanadi River. Clear everybody? कोई डाउट है यहाँ तक? नाउ इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. ठीक है? नाउ ये भी सुना होगा शायद आप लोगों ने, इंस्टा पे वगैरह पे भी आ रहा था. एवरीबडी, हैव यू गाइस हर्ड ऑफ दिस टॉपिक? बताओ. हाँ जी, नहीं सुना? चलो मैं बताते हैं. India and UK signed a comprehensive economic and trade agreement on July 24. ठीक है? So what do we call it? CETA. CETA. The name is CETA. It is being considered India's most ambitious trade agreement till date, covering 26 sectors from tariffs to technology. It's a very ambitious project for India. It's a very ambitious trade agreement for India. Why? Because it will include a lot of trade between India and UK now. CETA is India's 16th trade agreement. So if we talk about the agreement, it is India's 16th trade agreement. देखो बच्चों, हमारा ना बहुत कंट्रीज के साथ ट्रेड होता है. मतलब ये नहीं कि सबके साथ हमारे अग्रीमेंट है. तो ये मत सोचना कि इंडिया में क्या सिर्फ डज इंडिया ट्रेड ओनली विद 16 कंट्रीज. नो, इंडिया ट्रेड्स विद अ लॉट ऑफ कंट्रीज. इंडिया ट्रेड्स विद यूएस, चाइना. India does not even have a trade agreement with US China as well. So this does not mean, don't think कि जो trade agreement है तो उतनी कंट्री से ट्रेड है. ट्रेड बहुत कंट्रीज से है, बट जो ट्रेड अग्रीमेंट एक रीच हुआ है, इट हैज बीन रीच्ड विद 16 कंट्रीज एंड 16th इज यूके. क्लियर? यहां तक कोई डाउट है बच्चों? Act is aimed at doubling bilateral trade in goods and services to $112 billion from $56 billion at present. So, what is the purpose? That there should be a increase of trade between US and UK and India. Abhi, currently we have $56 billion trade between India and India and बताओ बताओ. UK. Very good. Yes. If we talk about today's date, India and UK have trade of $56. Yes, Siri, very good. $56 US dollar billion. Now, with this pact, it aims at doubling bilateral trade in goods and services to $112 billion. ठीक? Clear बच्चों? यहाँ तक clear है सबको? Clear? Okay. Now, what India gains from the trade agreement? CETA provides an unprecedented duty-free access to 99% of India's exports to the UK, covering nearly 100% of the trade value. देखो, अभी what did we read in the first slide? पहले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? Anybody who can tell me? यहाँ से और वहां में क्या डिफरेंस आ रहा है? कोई पढ़ के बता सकता है? Duty free in UK. ठीक है, वेरी गुड. एवरीबडी सी कि हाउ यूएस हैज levied 50% tariff on Indian goods. ठीक है, and now on the contrary with UK you can see 99% of India's export. Basically whatever India exports to the US, it will be 99%. 99% टैरिफ की बात नहीं हो रही है, 99% प्रोडक्ट्स की बात हो रही है. दे विल बी ड्यूटी फ्री, देयर विल बी नो टैरिफ. Now now जितना मैंने बताया, now you guys tell me, will it give a good market to the Indian products in the UK or not?
बताओ, if the product is cheap Yes, in yes, UK, yes. which goes from India, will it not give it a very good market there in UK? क्योंकि ऑब्वियसली जब ड्यूटी फ्री है तो सस्ता होगा। अरे यार, सुना नहीं है एयरपोर्ट पे वो चीज ड्यूटी फ्री है, खरीदनी है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ड्यूटी फ्री का मतलब क्या होता है? द प्रोडक्ट इज एट अ वेरी चीपर प्राइस, यू ऑलवेज ऑप्ट फॉर प्रोडक्ट्स विद आर चीपर। नाउ इफ द प्रोडक्ट्स इन यूके आर चीपर, everybody will buy it, so India will get a very good market. That is the reason that the trade will expand between US and UK and India. बताओ, are we clear till here everybody? This was easy and interesting, no? कुछ तो बोला करो, कुछ तो। यस मैम, नो मैम, कभी कभी बोल लिया करो मैम, तो सोचो पूरा 1.5 घंटा बक 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 करती रहती है। तुम लोग थोड़ा ही सा बोल लिया करो, मुझे थोड़ा सुकून रहेगा। मैम कैमरा भी खोल के बैठती है, मैम बोलती भी रहती है, तुम लोग को तो हाँ ना भी नहीं बोलना है। चलो हाँ ना बोलो अब तुम लोग पहले। क्लियर एवरीबडी? Now, how? हाँ जी। फैस्ट सेज हाँ। व्हाट अबाउट एवरीबडी एल्स? चलो, सीरीज नॉट वेल टुडे, आई लास्ट नॉट आस्कर। अर्पिता, साकेता, वैष्णवी, यू गाइस टेल मी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अर्पिता, अर्पिता ने Yes. भी बोल दिया। साकेता? Yes, ma'am. हाँ ठीक है, वेरी गुड, तुम लोग से तो ऐसे ही निकलेगा, यस ठीक है। और बच्चों कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नाउ 99% of the products are tariff free for India now for being exported to UK. This includes labor incentive sectors such as, so what are the sectors which are going to be very duty free? Textiles, leather, marine products, gems and jewelry and toys, as well as high growth sectors like engineering goods, chemicals and auto components. Okay, so basically all these products will be duty free to UK when they will be sent to UK. Concessions from the UK in labor-intensive sectors will promote large-scale employment generation, empowering artisans, women-led enterprises, and MSMEs. Now, these sectors, which are usually labor incentive, gems and jewelry labor incentive sector, labor is involved, textile maybe labor is involved. Okay, now, why is it written that it will generate employment? तुम लोग सोचोगे मैम आज पागल हो गए तो क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? Because I just want to know that whether you guys are understanding it or just saying yes for the sake of it. देखो, our products will go there in UK. ठीक है, now obviously they will be cheaper. Will not the demand increase there? Demand बढ़ेगा, everybody agrees? Now will the demand will increase there? We will increase production. When the production will increase, since it is a labor incentive sector, will it not lead to more employment generation? बताओ, बताओ, समझ आया या नहीं? Everybody? MSEME full form, if anybody can tell. MSME full form. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम enterprises. So these MSMEs, if they are involved in, let's say, toys, gems and jewelry, chemicals, so even they can expand. The agreement includes a wide ranging package. ये वाला line next point पे भी है, देखना। Now this is also very important, बच्चों। The agreement goes beyond goods and addresses services, a core strength of India's economy. So the trade concessions is not only for the goods that are sent there, it is even for the services that we will provide to them. So this is also very important. So you have to remember that the trade includes services as well. The trade deal covers sectors like information technology, financial and professional services, business consulting, education, telecom, architecture, and engineering, creating job, new avenues, and opportunities. So even these will be tariff free. Now, if we talk about what India has given to them as concession, they have given 99% products are tariff free. Now, if we talk about what we have provided them, India has opened 89% of its tariff lines, covering 91% of UK's exports. So 91% of the export that they will, export to India. So basically, India to import करेगा ना,
दैट विल बी टैरिफ फ्री। तो तुम लोग को मुझे एक चीज बतानी है। अब बताओ, इंडिया ने जो ये 9% है, ये कौन से सेक्टर को नहीं ओपन किया होगा, बताओ। देखते हैं। अब तुम लोग नहीं बता पाए ना, मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी तुम लोगों से। Which sector you think that India is sensitive to and it has not opened its market even to US? Sorry, even to UK. बताओ। Pharmacy, agriculture. Very good, fast. Yes, agriculture and dairy. Yes, Arpita, very good, बच्चा. However, India has safeguarded sensitive sectors like dairy, cereal, ये सब agriculture है dairy, millets, pulses, certain essential oils, apple, certain vegetables, gold, jewelry, lab-grown diamonds. So basically, for this, India has actually reserved its market. तो basically, what did they say कि आपके products उन पे हम tariff लगाएंगे if you send it to them here, because why? क्योंकि we want कि जो हमारे products हैं वही flourish करें in the Indian market. Strategic exclusions also cover critical energy fuels, marine vessels, some polymers, worn clothing, smartphones, and optic fibers. Even जो 9% है उसमें these are also covered. Further, there are some further there are some products where India is building domestic capacity. Now, I hope everybody must have heard about the Make in India campaign that is happening. तो ऐसे कुछ products हैं जो Make in India के लिए they are being so much promoted now. India has also closed its market for that. India has not opened its market for the Make in India or PLI. PLI ये जो है ये है product linked incentive. ठीक है, product linked incentive. It is also a part of the Make in India thing. तो उसमें they have said कि ठीक है, we'll gradually open our market after 5 to 7 to 10 years. But for now, अभी we are not opening our market. India has gradually and selectively opened their markets to alcoholic beverages. Now, even they have opened their market for alcoholic beverages. ठीक है, what they have not opened for is, कौन बताएगा किस लिए नहीं खोला है मार्केट, किस किस किसके लिए नहीं खोला है? This vegetables, gold, jewelry, Agriculture lab-grown means diamonds, heavy. essential oils. जी बच्चा, Make in India products, PLI products. ठीक है. Bilateral safeguards have been built in to manage any sudden import surges that could harm domestic surge industries. So basically, safeguards have been put into picture so that the Indian industry is not affected. ठीक है, जो भी चीज इंडिया जिसके पे डिपेंडेंट है वो मार्केट अभी भी नहीं खोली है. पहले बताओ, आर वी क्लियर टिल हियर एवरीबडी? देखो, whatever I have taught you on the PPT, the topic is more than sufficient. You don't need any additional details. अगर ये समझ आ गया, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी न्यूज आएगी, you will be able to solve it. बताओ, क्लियर? कोई डाउट है? PPT क्लियर? ठीक है, चलो. नाउ सिंप्लीफाइड रूल्स ऑफ ओरिजिन. ठीक है, द अग्रीमेंट सिंप्लीफाइज, क्या लिखा है? हाँ. The agreement simplifies compliance by allowing exporters to self-certify the origin of products, reducing time and paperwork. The UK importers can also rely on importers' knowledge for certification, further easing trade. We'll just read this again. What does it say? It says, the agreement simplifies compliance by allowing exporters to self-certify the origin of products. So basically, earlier there was used to be a lot of paperwork कि ठीक है, कोई प्रोडक्ट जा रहा है, इससे साइन कराओ, उससे साइन कराओ, उससे साइन कराओ. Now what they have put it in there that you just have to self certify the origin of the product, and that is more than sufficient. So self certification they have introduced. The UK importers can also rely on importers' knowledge for certification, further easing trade. Enhanced mobility of professionals. Even this point is very important. So within the trade, we have also included a point relating to professionals. देखो, किसी भी कंट्री में कितने लोग काम करने जा सकते हैं ना, that is decided between the countries. ये नहीं है कि पूरा influx of हुजूम चला गया and they go and live there. No, the number is decided by the countries. So basically, for these people, apart from other impetus to India's services sector, up to 1,800 Indian chefs
yoga instructors and classical musicians can work in the UK every year under these provisions. So impetus has been provided even to these people that 1800 up to 1800 they can go and work in US. Who? Chefs, yoga instructors and classical musicians. पहले बताओ क्लियर है अब तक? ठीक है चलो. Double Contribution Convention. A key innovation in the agreement is the Double Contribution Convention. This exempts Indian workers and their employers from paying UK social security contributions for up to 3 years when on temporary assignments. So basically what happens, if you work in a different country, so you pay a tax over there as well in your home country. So what they have done now, that if you go there for a temporary assignment up to 3 years, you don't have to pay any social security contribution. So it's basically an exemption for double contribution convention. Around 75,000 workers and over 900 companies are expected to benefit, resulting in savings of more than 4,000 crores. So obviously, when they don't have to pay a double contribution convention, the Indians will be saving up on around 4,000 crore INR. क्लियर है? पहले बताओ कोई डाउट है एवरीबडी? कोई डाउट है? क्लियर है? कुछ कोई बोल ही नहीं रहा है. ठीक है. हाँ बच्चों, वन थिंग वो मैं एक बार चेक कर रही थी, जो मैंने टैक्स वाला पॉइंट बोला था ना, नॉट टैक्स, दैट इज द रीजन आई चेक्ड इट. नॉट टैक्स. आप लोगों ने ईपीएफ, एनपीएस ये सब सुना है? गाइस थोड़ा सा, इफ योर फादर और मदर इज इन गवर्नमेंट जॉब, ये सुना है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फर्म, नेशनल पेंशन स्कीम. ठीक है. सो व्हेन यू आर अ गवर्नमेंट कंपनी एम्प्लॉय और इवन अ प्राइवेट एम्प्लॉय, व्हाट हैपेंस, यू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर दिस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन. ठीक है. बेसिकली इट गोज फ्रॉम योर सैलरी ओनली. फॉर इंस्टेंस लेट्स से इफ आई एम अर्निंग 1 लाख, तो ऐसा कुछ होगा 10% फॉर से, तो 10,000 आपको उधर भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. वाई? ये आपको ही मिलता है एंड में, बट इट रिड्यूसेस अ पार्ट ऑफ योर सैलरी. व्हेन यू गेट रिटायर्ड और एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यू कैन जस्ट ब्रेक दैट ईपीएफ एंड टेक आउट द मनी. सो नाउ ये वो सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट इज बाय आई क्रॉस चेक्ड इट. ठीक है. नाउ दे डोंट हैव टू पे देयर एज वेल एज हियर, सो दे कैन जस्ट पे इट हियर एंड नॉट देयर. चल रहा है का? समझ आया? Sure. Let us move ahead. Now, some weekly current affairs, just bullet points from the last. ये लास्ट टू लास्ट वीक का है. लास्ट वीक का हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, क्योंकि ये क्लास पेंडिंग रह गई थी ना. Recently held a test series between India and England named Tendulkar Anderson Trophy after legendary cricketers Sanjay Tendulkar and James Anderson. तो basically टेस्ट सीरीज होती है between different countries. तो जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच की टेस्ट सीरीज है, we have named it. What is the name? Tendulkar Anderson Trophy. It is named after the legendary cricketer Sachin Tendulkar from India and England cricketer James Anderson. बताओ इसमें कोई डाउट है? तो बहुत ही इजी है. आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा. कोई डाउट है यहाँ तक? सत्यपाल मलिक, former governor of the states of Jammu and Kashmir, Goa and Bihar, passes away. In case in obituaries देखे ना, क्यों that this person passed away recently. Who was he? सत्यपाल मलिक. Since your exam is in March, तो ये तो मुझे लग रहा है तब तक काफी ओल्ड हो चुका होगा. Singapore emerges as the top city in the global AI city index. Bangalore with 26th rank emerges as the top city in India. ठीक है. So if we talk about which country has advanced more in the AI, so Singapore emerged as the first country. It has secured the first stop. And even India, if we talk about who is the first country in AI advancement, तो कौन है? Who is the first one in India? Bangalore is first in India and 26th at a global level. ठीक. 8th 2027 Commonwealth Youth Games will be held in Malta. So if we talk about the Commonwealth Youth Games, it will be held in Malta. इस देख लेना, मार्च में एग्जाम है आप लोग का. All India Football Federation appoints Khalid Jamil head coach of Indian men's football team. So football association है जो,
उसका कोच कौन हुआ, has been appointed Khalid Jamil of the men football team. Garden Reach Shipbuilders and Engineers has delivered INS Himgiri. INS का full form कोई बता सकता है? Anybody who can tell me the full form for INS? बताना. हाँ जी. Indian Navy ship. Indian Naval Ship. Very good, Faz. Indian Naval Ship. ठीक है. आप लोगों ने सुना होगा INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, INS सरयू, सूर्या, समथिंग लाइक दैट. सुना है? So similarly, this Garden Reach Shipbuilders and Engineers, it's a company which has delivered INS Himgiri to the Indian Navy under Project 17A. Important. ठीक है? Which INS amongst the following was recently given to the Indian Navy? It is INS Himgiri. ठीक. Magnus Carlsen has won the first chess esports World Cup held in Riyadh, Saudi Arabia. So there was a chess World Cup held in Riyadh. ठीक है. But it was an online chess. Who has emerged first? Magnus Carlsen. और ये जो इवेंट है ना, इट वाज द फर्स्ट टाइम, इसलिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम देयर वाज अ चेस टूर्नामेंट. अच्छा ये बताओ, भी रिसेंटली ना अ लेडी वन द वर्ल्ड कप, लाइक द चेस वर्ल्ड कप, विमेन्स वर्ल्ड कप. व्हाट इज द नेम ऑफ द लेडी, इफ यू गाइस आर अवेयर? बहुत इंपॉर्टेंट है. दिव्या देशमुख. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूज़पेपर वगैरह कुछ नहीं पढ़ते हो क्या तुम लोग? दिव्या देशमुख. नाउ, first BIMSTEC traditional music festival titled Saptasur, Seven Nations, One Melody. Sorry, Seven Nations, One Melody held in New Delhi. Member countries India, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar. बच्चों एक चीज बताना, हमने बिम्स्टेक को कवर कर लिया है? क्वेश्चंस आते हैं इस पे. बिम्स्टेक को कवर किया है हमने? हाँ जी. नो. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके. तो ऐसा करती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में मे बी लेट्स डू इट एज अ टॉपिक. और यूएन, ये सब कुछ बेसिक पॉइंट्स है ना, इनको भी कवर करते हुए चलते हैं. यूएन किया है? यूएन इज डन. Okay, okay, ठीक है. So let's do BIMSTEC in the next class so that you understand it better. Let us read this news first. First, BIMSTEC Traditional Music Festival. So it's the first time that we have a traditional BIMSTEC music festival. The name is Saptasur, Seven Nations, One Melody. It is held in New Delhi. So if we talk about the member countries of BIMSTEC, India, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, and Thailand. Don't worry, what is BIMSTEC? We'll cover it in the next class. Shibu Soren, former Jharkhand CM, passed away. This is also a news from obituary. ठीक. चलिए बताओ, क्लियर हुआ है सबको? हाँ, अभी और है. ISRO has launched HOPE, Himalayan Autoplanetary and Planetary Exploration Analog Mission in Sokar Valley, Ladakh. So basically, what ISRO has done, it has created this HOPE. HOPE is what? It's a space-like phenomena. उन्होंने ना बेसिकली कहते हैं एक स्पेस टाइप की जगह बनाने के लिए कराया है, सो दैट दे कैन स्टडी द इफेक्ट्स दैट एस्ट्रोनॉट्स हैव देयर इन स्पेस. तो बेसिकली इट इज दैट कि उनकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल. दे हैव लॉन्च्ड अ प्रोटोटाइप ऑफ स्पेस दैट इज होप, Himalayan Autoplanetary and Planetary Exploration Analog Mission in Sokar Valley, Ladakh. ठीक है. Niti Aayog released India's first electric mobility index. That which electric mobility index means कि uh, how advanced a state is in electric mobility, EVs. I hope you know what is EV. So Niti Aayog has released India's first electric mobility index. So they directly asked you a question like this, that Niti Aayog has recently issued an index. What is the name of that index? That is Electric Mobility Index. ठीक है. अब बताओ बच्चों, कोई डाउट है किसी को? एनीबडी? नो? सब क्लियर है? एवरीबडी इज क्लियर विद ईच एंड एवरीथिंग? पक्का? वैष्णवी क्लियर है बच्चा? In वैष्णवी? MSCT, in हाँ जी MSCT, वैष्णवी. in MSCT, I have checked in online.
So फिर there were like कि past 6 months they were asked current affair. ओके, सो व्हाट इज योर डाउट फैज बच्चा? No, no, you were asked in the last class कि MSCIT में कितने months का current affair आता है. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, 6 मंथ का आता है ना, लेकिन इट्स गुड दैट यू आर डूइंग इट फ्रॉम नाउ। तभी एक फ्लो बनता है, तो ये भूलना नहीं है, बिकॉज ईच एंड एवरी न्यूज इज कनेक्टेड। तो ये जो ट्रम्प वाला पढ़ रहा है, इट स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल अगस्त में ये, और अभी देखना नवंबर में भी आ जाएगा, तो यू शुड हैव अ फ्लो इन द माइंड। हाँ जी वैष्णवी बच्चा, क्लियर है सब? साकेथा, अर्पिता? Ma'am, I have a doubt. Ma'am, the hot वैष्णवी, topic right now is about the Supreme Court and the stray dogs decision and the election that Rahul Gandhi exposed. So, both of this topic, do we need to study in detail? स्ट्रे डॉग वाला तो नहीं यार, नहीं, मतलब नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट। एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना, एंड राहुल गांधी वाला कर लेना। इफ पॉसिबल मैं करा दूंगी, बट इफ नॉट पॉसिबल आप पढ़ लेना, अगर होगा तो मैं ही पढ़ा दूंगी, अदरवाइज यू जस्ट कवर इट, ठीक है? एनीबडी एल्स, किसी और को कोई डाउट है? पूछ लिया करो, कुछ भी डाउट होता है ना, मैम ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं है, आई एम हियर फॉर दैट पर्पस, मैं सब बता दूंगी। हाँ जी जीके फ्रांस। सीजन कब से स्टार्ट हो गए? क्या बच्चा? जीके सीजन्स, जीके जीके। जीके? बच्चा वो आप एक बार सर से पूछो ना कि कब स्टार्ट करें, बोल देना कि सुहानी मैम ने पूछा है कि जीके कब से स्टार्ट करें, ठीक है? ओके ओके। मेरा नाम ही ले लेना, पर पूछना कि सर हम कब से स्टार्ट करेंगे। आई थिंक सर भी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एग्जाम मार्च में है और जल्दी हो जाता है जीके, तो फैज इतनी टेंशन मत लो। मे बी इफ सम अदर बैच ज्वाइंस अस, सो बेसिकली ही वांट्स टू अमेलगमेट 2 बैचेस टुगेदर, ताकि आराम से हो जाए, उनका भी कुछ छूटे नहीं, ठीक है? और किसी को कोई डाउट है बच्चा? ठीक, चले अब फिर। ठीक है, चलो बाय बच्चों, टेक केयर, थैंक यू।